Hello everyone, so I'm Rahul Kaushik and I welcome you all on my channel Tivvra. And today I'm going to start lecture number 5. Just a minute. Today I'm going to start lecture number 5 and we will be covering water. Water, as you know, it's very important. Almost 70% of our body is water. And water, आप जानते हो हर जगह पानी 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 के बिना जीवन संभव नहीं था. तो आज मैं वाटर लेने वाला हूँ. तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज वाटर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये प्रिपेयर कैसे होता है. वी आर गोइंग टू टेक ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो पानी देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं लेक्चर लेता हूँ तो मुझे लेक्चर के दौरान भी पानी पीना पड़ता है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली. ह्यूमन बॉडी है 75% ऑफ द वाटर एंड सम प्लांट्स हैव एज मच एज 95% वाटर. Just imagine there are plants which contain 95% of the water, right? Next point, just look at the table. Oceans have almost 97% of Earth's water. Saline lake and inland seas have just 0.008%. Polar ice 2%. So just add it, you will be getting almost 99.4%. And then the groundwater is almost 0.6%. So we are living on the groundwater. Suppose currently I am living in Haryana or Delhi. So यहाँ पर तो हम लोग ग्राउंड वाटर को हार्नेस करते हैं और उसी को पीते हैं, वही ड्रिंक करते हैं. तो सोचिए सारी दुनिया, whole world is dependent on this 0.61%, right? So these are just content, these are just statistics and which I am telling you. Atmospheric water vapors are, so there are always water vapors. Atmosphere में भी हमेशा water की vapors होती हैं. रिवर में भी हमेशा वाटर होता है. तो दैट इज ओनली 0.001%. वी हैव गंगा रिवर, वी हैव ब्रह्मपुत्र, सरस्वती एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट. सो दे जस्ट हैव 0.0001% ऑफ द वाटर. तो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? एक्चुअली मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर कैसा होता है, कैसा दिखता है. सो इट इज कलरलेस एंड टेस्टलेस. एवरीबॉडी नोज दिस. Pure water is bad conductor of electricity due to very low degree of ionization. So let me tell you, in order to have properties or in order to be a good conductor, your solution should have ions. Like we generally say that NaCl का जो aqueous solution होता है, that is a good conductor. So if it is a good conductor, then what does that mean? That means it contains ions like Na plus aqueous, like Cl minus aqueous in water. Right, because of these ions will move and movement of ions will cause movement of charge, and if there is movement of charge then we will say current is being produced, right. So here I am calling NaCl as electrolyte and it is a strong electrolyte. So it is electrolyte because it is containing ion. But if I take pure water, so let me tell you, in case of pure water, if you are taking pure water in a container, then again you will be getting some ions, but these ions are very less. Let me tell you, if you have 10 raised to the power 9 molecules of this, they get 10 raised to the power 9 molecule, out of them only 2 molecule will produce it, and their concentration is this much. In pure water I am talking about at 25 degree Celsius. तो 25 डिग्री पर आप देखिए कितने कम, मतलब आप इमेजिन कीजिए इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस की, इतनी कम है OH माइनस की. तो मेनली आई कैन से 99.9999% we have neutral water, and because this water is neutral, so it is having very poor conductivity. To increase its conductivity we have to add some electrolytes. So pure water is bad conductor of electricity due to very low degree of ionization. Maximum density of water is at 4 degree. ये बात आपको पता है, due to hydrogen bonding. Next point, the crystalline form of water is ice. Crystalline form, because अगर मैं liquid लेता हूँ, if I take liquid, this is not crystalline form. In this bottle we have liquid water, there are no crystals. If you want to see crystals, then you have to see the ice. The atmospheric pressure, ice crystallizes in the hexagonal form, but at very low temperature it is condensed to cubic form, right. This point is also very important. So ice is basically in two forms. One is hexagonal form, another is condensed cubic form, right. So now I will tell you, density of ice is less than water, because if you take water then ice will float over it.
So density is less than this. In winter season, ice formed on the surface of the lake provided the thermal insulation which ensure the survival of aquatic life. ये बड़ा important है कि इतने ठंडे इलाकों में, इवन अंटार्कटिका में, और वहाँ जो फिश एग्जिस्ट करती हैं वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं? देखिए यहाँ अगर पानी भरा हुआ है, right? Suppose this is a lake. Yes, for chemists this is a lake, and we have water over here. So this water will freeze, and below this, suppose here the temperature is minus 40 degree, but here the temperature will be approximately 0 degree Celsius. और इस टेम्परेचर पर एक्वाटिक लाइफ कैन सर्वाइव. सो वो जो ऊपर आइस बन गई थी दैट विल एक्ट एज इंसुलेटर. यहाँ पर आपका टेम्परेचर कैन बी minus 40 degree, but at this point your temperature will be 0 degree Celsius. And at 0 they can survive, but at minus 40 fish cannot survive. So that's why aquatic, this is the reason of existence of aquatic life. Then we have, due to hydrogen bonding with the polar molecule, even covalent compounds like alcohol and carbohydrate dissolve in the water. Generally like dissolve like, and polar dissolve polar, and non-polar dissolve non-polar. So water is a polar solvent, but still it dissolve carbohydrates. It dissolve glucose, sucrose. So why it dissolve all these? Why? What is the reason? Can you tell me? Now I will tell you, because these glucose, sucrose, these contain the groups like OH, and this OH can form hydrogen bond with the water. This OH can form hydrogen bond with the water. So due to the hydrogen bond, they can be dissolved. Even non-polar compound or the hydrocarbons. Hydrocarbons are generally non-polar compound. So non-polar compound like glucose, fructose, sucrose, even they can be dissolved in the water, right? This leads to high freezing point, high boiling point. So generally, due to hydrogen bonding, generally as molar mass increases, H2O, H2S, right? Generally as molar mass increases, boiling point increases, but H2O is exceptionally high. Similarly, in its group NH3 is exceptionally high. Why? Because of hydrogen bonding. So we have studied this in chemical bonding. Chemical bonding mein when we studied about the hydrogen bond, two types of hydrogen bond, then we do this thing in detail, right? So physical properties of hydrogen, also physical properties of water. So we have two types of water, H2O, and this is heavy water, deuterium. Isotope of hydrogen is taken. So molecular mass is 18, and here it is 20. You can easily calculate it, right? Just a minute. Now we have melting point, 273, it is 276, slightly greater than this. Boiling point, its boiling point is 373 and its boiling point is 374.4. Enthalpy of formation is minus this. So just look at it. Boiling point is slightly higher, melting point is slightly higher, it is having everything higher. Enthalpy of vaporization is slightly higher, and then we have density that is also slightly higher, and this was the temperature at which the density is maximum. So dielectric constant is also higher. Dielectric constant of this is higher. It means अगर किसी चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है तो मतलब आप NaCl डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस में जो फोर्स होगा वो 1/10 हो जाएगा. तो फोर्स कम होगा तो इजीली घुलेगा. तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो उतना ही ज्यादा अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा. तो किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं हैवी वाटर और इसमें, तो नॉर्मल वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. ये बात ध्यान रखना भाई. नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी तो पता ही नहीं है अभी तक, इसका डेटा ही नहीं है, तो हम इसकी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, राइट? सो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. तो इन द गैस फेज वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल. आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर पता है, एंड एंगल इज 10 डिग्री 4 मिनट, एंड द OH बॉन्ड लेंथ is 95.7 picometer as shown in the figure. Now I will show you that figure. It is highly polar. So just look at the figure. This is water. We have two lone pairs. Now it says this angle is 104 degree 5, 104.5 degree, and this bond length is
95.7 picometer. So now you know about the bond length. It is highly polar, delta positive and delta negative, electronegativity difference. In the liquid phase, water molecules are associated together by hydrogen bond. So just look at it. This is the water molecule having delta positive and delta negative. Due to this, it is polar. This is the angle, this is the bond length. Everything is provided. The band structure of water. Next, crystalline form of water is ice. I already told you that water exists in form of ice as a crystal. At atmospheric pressure, ice crystallizes in the hexagonal form, but at very low temperature, it is in cubic form. Very important point. देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर प्रेशर 1 atm के अराउंड है तो वो हेक्सागोनल फॉर्म में रहेगी, लेकिन वेरी लो टेम्परेचर वो कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाएगी भाई, यानी 0 डिग्री के अराउंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. देयरफॉर इट फ्लोट्स. इन विंटर सीजन आइस फॉर्म ऑन द स्लेग ऑफ लाइम. ये थर्मल इंसुलेटर का काम करती है, जिसकी वजह से उस नदी के नीचे फिश और वो सारी चीजें सरवाइव कर पाती हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इस द आइस, जो आइस यहाँ पर फ्रीज होती है, दिस एक्ट एज इंसुलेटर. तो इंसुलेटर मीन्स if the temperature is minus 40 degree here it will be approximately 0 degree Celsius. तो aquatic life यहाँ survive करती है. So this is hexagonal. This is hexagonal structure. This is how hydrogen water molecule exists. So there are two H. This is O. This O is connected by further. This H is connected further hydrogen bond. So every water molecule is connected to 4 other water molecules. This is hexagonal form. Ice is highly ordered 3-dimensional hydrogen bonded structure. Each oxygen is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atoms at a distance of 275 picometer. Very important, I told you, हर ऑक्सीजन एटम 4 दूसरे ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर. देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कितने बड़े बड़े यहाँ होल्स होते हैं, तो इस वजह से डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम. तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, खोखला खाली स्पेस है, तो वॉल्यूम हाई होने की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है. इस वजह से आपकी जो आइस होती है वो फ्लोट करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, क्योंकि ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है. एक होता है आपने चीजों को प्रॉपरली जमा दिया, तो यहाँ केज लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम यूज करनी पड़ेगी. और जब आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम यूज करेंगे तो क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा वॉल्यूम यूज करने का मतलब बिल्कुल साफ है, और वो मतलब ये है कि डेंसिटी कम हो जाएगी, और इसी वजह से जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर तैरती है या स्विम करती है, राइट. तो इसका हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स ओपन स्ट्रक्चर दैट वाइडन होल. दीज होल्स कैन होल्ड सम अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एप्रोप्रिएट साइज इंटरस्टिशियली. उन होल में कुछ और मॉलिक्यूल आ सकते हैं. इंटरस्टिशियली मतलब उन होल का ही दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस. होल को ही हम ऐसे बोल सकते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. redox reactions I will show you the involving the water, then hydrolysis reactions, and then hydrate formation, right. So just look at it here. This is base, this is acid. So let me change the color. Now look at it. This is acid, this is base. In next reaction, this is acid, this is base. Look at it. In first case the water is acting as acid, in second case it is acting as base. So water is acting as acid as well as a base, so I will call that water is amphoteric in nature. Now we have ammonia in this. So amphoteric means something that can act as acid as well as base. Now let's move to the next point. So self ionization of water. So if you take two molecules of water, they will give you H3O plus aqueous and OH minus. So what does that mean? Now I will show you. If I write this way, so one molecule will lose H plus, another will gain H plus, and it will give you H3O plus and OH minus aqueous. Got it? So water can be easily reduced to dihydrogen by highly electropositive element. This one is very important. So if you react water with the metals like Na, so it will give you Na, solution will be basic. Similarly, if you add 2K solid plus 2H2, तो अगर आप इसे
हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ करोगे तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन से होते हैं? 1A और 2A ग्रुप वाले, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सीजियम, इनके साथ जो वाटर की रिएक्शन होगी दे विल प्रोड्यूस 2KOH प्लस H2। तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, वो उड़ जाएगी और ये बेस बनेगा, योर सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक, योर सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक। एनी डाउट? चलिए, thus it is great source of डाइहाइड्रोजन। इनफैक्ट ये एक तरीका है जिससे आप वाटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम कहते हैं आप बहुत सारे पेड़ लगाओ, बहुत सारे पेड़ लगाओ, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि पेड़ कुछ ऐसा करते हैं कि जो CO2 हम सांस लेते हैं तो O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। पेड़ उल्टा करते हैं, वो CO2 अंदर लेते हैं और O2 बाहर देते हैं। तो वो जो O2 पेड़ हमें देते हैं, ट्रीज हमें देते हैं, उस O2 को हम इनहेल करते हैं एंड वी स्टे अलाइव। तो बिना पेड़ों के O2 कहाँ से आएगी और हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? तो देखिए, ट्रीज डू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, हम बोलते हैं उससे वो अपना खाना भी बनाते हैं। तो क्या होता है, वो नेचर में प्रेजेंट CO2 को लेते हैं, CO2 को लेते हैं और ये वाटर कहाँ से आता है? या तो वो ट्री की रूट से आता है या वो उनके जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके ऊपर होता है। तो वो लीव्स के ऊपर वाटर और CO2 मिलके ये बना लेते हैं। दिस इज ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज ही तो है जो हमें भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम जो सुक्रोज भी खाते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाता है बॉडी के अंदर जाके, एंड देन दे गिव O2 एंड H2। तो पानी तो वहीं रह जाता है, वाटर तो, एंड वी हैव O2 गैस। दिस O2 इज इनहेल्ड बाय ह्यूमन बीइंग। So it is a great source of dihydrogen, this one, and water is oxidized to O2 during the photosynthesis. So here we have water and it is being oxidized to O2, and this process is called what? Photosynthesis. This process is called photosynthesis. With fluorine also it is oxidized to O2. So 2F2 plus 2H2 will give you 4H plus and 4F minus, again O2. सो फ्लोरीन के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यू कैन सिंपली राइट 2F2 गैस, 2H2O, you can simply write HF aqueous, and I have already told you that this HF aqueous, तो यहाँ HF aqueous का एक सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं होता। एक्चुअली सॉल्यूशन के अंदर H प्लस अलग होता है और F माइनस अलग होता है। इनफैक्ट ये H प्लस स्टेबल नहीं होता, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, बट HF कुछ भी नहीं होता, ये बस लिखने के लिए HF aqueous है, नहीं ऐसा कुछ, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको सीरीज पता होनी चाहिए, ये वाटर की रिएक्शन कैसे होती है। देखिए इसको हम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, एंड यू पीपल स्टार्ट स्टडिंग इट सिंस योर 9th क्लास। तो आप देखिए यहाँ ये जो मेटल्स हैं हम इन्हें बोलते हैं दीज आर हाईली एक्टिव मेटल्स। तो क्या होता है, रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, जो केतक है दे कैन इवन रिएक्ट, पोटेशियम तक दे कैन रिएक्ट इवन विद द कोल्ड वाटर। तो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर देते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। और जब आप उन्हें कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, K प्लस H2O विल गिव यू KOH और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद वी हैव सोडियम, लिथियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। दीज ग्रुप रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन विद द हॉट वाटर और स्टीम। तो इनकी जो रिएक्शन होती है कोल्ड वाटर के साथ ही दे रिएक्ट वायलेंटली, फटाफट मतलब एकदम बुलबुले उठने लग जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, ये कोल्ड वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। थोड़ा सा अगर आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर दिया तो रिएक्शन वायलेंट हो जाएगी, और स्टीम या कुछ कर दी तो देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वाटर की रिएक्शन तेज होती जा रही है। तो जो बहुत एक्टिव था वो तो कम टेम्परेचर पे ही काम चला रहा था, बट जो कम एक्टिव था उसके लिए आपको टेम्परेचर, थोड़ा सा वाटर का टेम्परेचर यू हैव टू इंक्रीज फॉर द लेस एक्टिव मेटल्स, और डाउन द ग्रुप एक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, Mg मैग्नीशियम react very slowly with the cold water, strong reaction with the hot water or steam, right? So this is the case of magnesium, and after this we have aluminium, titanium, manganese, zinc, chromium. So aluminium, titanium, manganese, zinc and iron, there will be moderate reaction with the hot water or steam. So they will not react with the cold water because their reactivity is low. You have to take hot water, right?
and nickel, tin and Pb, they do not react with the water at all. So nickel, tin and Pb, these do not react with the water. They react with the hot water only. They react with the moderate water and they react with the cold water. They react with the more moderate water, moderate temperature water. So this is very important. This is very important. तो जो इसके टॉप पर है वो ठंडे पानी में भी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जो इसके थोड़ी सी नीचे तो वहाँ ठंडे पानी के अलावा रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी और अगर गर्म कर दिया तो वायलेंट हो जाएगी। जब मैं डाउन आ रहा हूँ मतलब मैग्नीशियम ऑनवर्ड, तो ये भी एक्टिव है बट एक्टिविटी डाउन होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मैग्नीशियम ठंडे के साथ करेगी बट वेरी स्लो, थोड़ा सा अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए तो उसे हीट कर दो वाटर को। देन यू हैव एल्यूमिनियम, zinc and iron. So moderate reaction with the hot water or steam, and nickel, tin and Pb, they do not react with the water at all. चाहे गर्म करो, ठंडा करो, स्टीम करो, कुछ भी करो, right? And they do not react with the cold water, hot water, steam और diluted acid, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट जगह, राइट? रिएक्टिविटी विद द एसिड्स। तो बट वो एस ब्लॉक में हम इसको दोबारा लेंगे। तो यहाँ मेरे को वाटर की रिएक्शन बतानी थी एक्टिविटी सीरीज में, तो वो मैंने समझा दी है। टॉप पे जो होंगे, मिडल में जो होंगे, नीचे आते आते दे बिकम ऑलमोस्ट इनर्ट, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग, राइट? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सो अगर आप इसे वाटर में डालेंगे तो यू विल गेट H3PO4, राइट? अगर आप इसे वाटर में डालेंगे तो यू विल गेट SiO2 plus HCl. If you are adding it into the water, you will get NH3, so ammonia, right? Hydrated formation. So from aqueous solution, many salt can be crystallized as hydrated salt. And what are those salts? There are some coordinated salts. Then we have interstitial salt and hydrogen bonded water. What is this? This compound is very important. So we have hydrate formation. So यहाँ पर coordinate bond बनेगा and every chromium will be forming 6 coordinate bond with the 6 water molecules. Here we have interstitial water. यहाँ water इनके बीच में, crystal के बीच में, void में घुस जाएगा। और ये hydrogen bonded water ये बड़ा interesting है, ध्यान से देखिए। When I am talking about CuSO4.5H2O, तो क्या होगा? Just look at it. This is CuSO4 5H2O. तो देखिए 4 H2O तो ये रहे, एंड देन वी हैव Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, तो प्लस और माइनस, तो देखिए ये जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब सल्फेट और इसमें जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, आपको ये दिख भी रहा है, इसमें आयंस भी है, O2 माइनस, तो ये सल्फेट हो गए। अब अगर मैं एक वाटर को देखूं तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल थे, 4 आर हियर आउट ऑफ 4, fifth one is hydrogen bonded through 2 sulfate ions. So this one is very difficult to remove. This one is very difficult to remove. You can remove these 4. You can remove these 4. So in this type, in this particular compound, you have ionic bond. In this compound, you have hydrogen bond. You have covalent bond. You have coordinate bond. These are all coordinate bonds, right? So all types of bond are present in this single compound, right? So this is very important. So how many hydrogen bonded water molecule are associated in this? So hydrogen bonding water molecule is 1 only out of 5. Only 1 water molecule, right? So this is all for today, guys. So this was everything about the water. We took many reactions which are experienced by the water and what kind of reactions it does, what are properties of water, इसकी property क्या है, कहाँ ये use होता है, कहाँ मिलता है, हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें हमने पढ़ी एंड आई होप यू रियली एंजॉयड दिस लेक्चर। तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू टेक हैवी वाटर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, बाय बाय।